तो ये अपने कुछ ब्रेक की कंडीशन और अपनी गाड़ी आई है अपनी पंचर निकलवाने में आए हुए हैं। तो क्या हुआ है, हमारी गाड़ी हो गई पंचर। तो मुझे लगा ये है ट्यूबलेस टायर, तो मैंने इसमें बनवा लिया ट्यूबलेस पंचर। लेकिन ये तो अपना ट्यूब वाला टायर है भाई साहब, ये तो कमाल हो गया। फिर अब इसका पंचर बना क्या होगा? इसका पंचर बनेगा कि ट्यूब डालेंगे? देख लो, इसी को चेक कर लो फिर। अरे वाह, गया क्या? अपनी ट्यूबलेस पंचर बनवाने की वजह से अपनी ट्यूब भी ख़राब हो गई, जिसके कारण मुझे ये ट्यूब भी चेंज करनी पड़ी। हाँ ना, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी गलती कभी ना हो। अब ये गलती हो गई, अब मुझे पूरी ट्यूब चेंज करवानी पड़ेगी। ये रही। और भैया यहाँ पर बोल रहे थे कि आप टायर भी नहीं डालो, क्योंकि आपकी टायर की कंडीशन भी कुछ सही नहीं है। सिर्फ आपकी टायर की कंडीशन 40 से 50% तक ही है। तो मैंने अब कहा कि अगला टायर ये लगा था क्या? अच्छा, तो गाइस यही है वो कि जिसके कारण हमारा टायर पंचर हो गया था। तो चलो जान दो। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that's ours. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. भैया ने हमें ये वाला टायर डालने का सजेशन दिया था, लेकिन वो टोटल 380 प्राइस जा रहा था, इसलिए हमने वो ये टायर ना डलवाते हुए अपना पुराना वाला डलवा रहे। अभी देखेंगे आगे जाके। और ये अपना ट्यूब वाला टायर निकला गाइस, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और गाइस इसका तो हम सांप बनेंगे। ये तो सांप ही बन चुके हैं, देखते हैं घर जाके क्या यूज़ होता है इसका।
गाइस अभी आपने देखा कि हमारे ट्यूब वाले टायर में उसने ट्यूबलेस पंचर बना दिया। तो आप भी ऐसे संभाल कर पंचर बनाएं और अच्छी जगह से बनवाना, क्योंकि रात का समय था, शायद उसको भी समझा नहीं होगा। लेकिन ये गलती तो कोई कैसे कर सकता है यार। मेरा 100 रुपये का नुकसान हो गया उस दिन, और रात का टाइम था। और अगर छोड़ो जान दो, ऐसे वीडियोस अभी ठीक है अपनी गाड़ी, अभी ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।